देखा तेनू पहली पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे। रब्बा मैनू की हो गया, दिल जानिए मैं तेरा ही हो गया। हो तेरे अगे पिछे घूमे सोहणिया, जदों तेरे हथ चुमे सोहणिया, मिठा मिठा जी हो गया। दिल जानिए हाय मैनू की हो गया। मैं दिल तेरे कदमां च रखा ढोलना, मैं तेरे अगे अखियां ना चक्का ढोलना। जे तेरे ते रब विचों तकना पए ते फिर मैं तेनू ही तक्का ढोलना। अभी प्यारा सा चेहरा दिखा है, जाने क्या कहूँ उस पे क्या लिखा है। गहरा समंदर दिल डूबा जिसमें, घायल हुआ मैं उस पल से इसमें। नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर। ऐ दिल तू बता रे, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर। ऐ दिल तू बता रे। बांधे थे धागे पर पाजी निकला ये हमसे आगे। हुआ क्या है हमको, इत पल ये दौड़े उत पल ये भागे, हो नहीं हो जाए तब नैना जागे। हुआ ये है समझो, दिल दिल के मिलते सांचे और खांचे जो है बनाता ऊपर से जाके। बत्ती है ना है धूप ना कपूर ना कपूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर। ऐ दिल तू बता रे, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर। ऐ दिल तू बता रे। अच्छा खासा काम मस्खरी, फोकट में बदनाम मस्खरी, दिल को दे आराम मस्खरी, पीड़ा
की वजह मस्करी थोड़ी बेवजह मस्करी करके तो देख दीदी है मजा मस्करी थोड़ी सी नरम मस्करी थोड़ी सी गरम मस्करी थोड़ी सी हया मस्करी थोड़ी बेशरम मस्करी ओ हो ओ हो दरिया से पकड़ मछली बादल से चढ़ा बिजली धूप में जो भरी तेरे हर आज मिटा खुजली कर ले मस्करी थोड़ी मस्करी अच्छा खासा काम मस्करी फोकट में बदनाम मस्करी दिल को दे आराम मस्करी पीड़ा हारी बाम मस्करी अच्छा खासा काम मस्करी फोकट में बदनाम मस्करी दिल को दे आराम मस्करी पीड़ा हारी बाम मस्करी नवराई माझी लाडाची ग आवड हिला चंद्राची ग नवराई माझी लाडाची ग आवडा हिला चंद्राची ग नवराई माझी नवसाची ग आपसुरा जाशी इंद्राची ग ग ग ग ग सुनियो जी इसको रखियो जतन से बड़ी नाजुक है कलिए अनमोल Quite the journey, and it's part to celebrate someone very special. So can I just get another round of applause for our bride, Hannah? There are a lot of people in this room that have helped to put this whole thing together. I'm not talking about just this week. I'm talking about months of preparations. So lots of moms, lots of dads, lots of sisters and brothers who have put in a lot of hard work. So I just want to thank you guys all so much. I give a very special shout out to our neighbors. So if you haven't noticed, wait, where are they? Actually not our backyard, and we haven't gotten an extension. So these are our wonderful neighbors. They have done wonders for us. We went over a couple of months ago to ask them just a question that's pretty unusual to ask. We said, hey, can we use your backyard for our wedding? And they're like, yeah, of course. And so even apart from just helping plan, helping set up, they've been a part of this whole thing. They have the sweetest kids as well. So please, if you see them around, they're at the back there. Now, can you put your hand up? Yes. Thank you guys so much. We owe this all to you. So if you see them around at night, make sure you give them a shout out. And a shot too. Okay, so that being said, we have a program today with a bunch of different dances. We have some singing as well. So I'm going to start off by passing it off to my dad, who's going to share some words for all of us. Okay. Wait for me to plug in my phone. So, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal, and Namaste to everybody. I'm going to speak in Urdu. If you guys don't understand it, you can meet me in the parking lot or in the outside the tent afterwards. I'll explain that in English. So I'm going to read it. वाह क्या खूब शाम है इतने खूबसूरत प्यार करने वालों से भरी हुई ये महफिल चूड़ियों की छनक की आवाज़ और गीतों की मदन धुन वैसे आपस की बात है आज हमारी हिना की मेहंदी की रात है रिम्पी हिना नेहा और मैं आप सबको खुश आमदीद जी आया नू और स्वागत करते हैं आज मैं कुछ अल्फाज में अजीब से शायराना से अंदाज में हमारी प्यारी हिना को चंद बातें कहना चाहूँगा पहली मेरी तरफ से तेरी मेहंदी का रंग और खुशबू में मोहब्बतें सबकी हैं इनमें मेरी दुआओं की नरमी है और तेरी माँ की प्यार की गर्मी है मेरी दुआ है तेरे ख्वाबों का सफ़र कभी कम ना हो
तेरी चमक और मुस्कुराहट कभी मध्यम न हो। फ्रॉम नेहा साइड। दीदी दीदी भी और दोस्त हो तुम मेरी, मेरे दिल की आवाज़ भी हो तुम, हमेशा मेरा सहारा, मेरी मुहाफ़िज़ और मेरी हमराज भी हो तुम। फ्रॉम रिम्पी। तुम मासूम और नन्ही सी गुड़िया, अभी कल ही की तो बात है, गुज़रते सालों में तुम मेरी ताकत और मेरा सहारा बन गई। मेरी जान, मेरी बेटी आज मेहंदी के रंगों में सज गई। और अब हम सब की तरफ से हिना के लिए चंद दुआएं। तेरे हाथों की ये मेहंदी हमेशा तेरे नसीब और खुशियों के रंग से भरे। तुझे हर कदम मोहब्बत, इज़्ज़त, सुकून और कामयाबी मिले। हमेशा खुश रहना और मुस्कुराती रहना। अपने हर रिश्ते को दिल, प्यार और मोहब्बत से निभाती रहना। हिना बेटा, we all love you so much. Thank you everyone for being part of this. Let's get the party going. Thank you. Okay, I feel like a lot of us are already crying. Thank you, Papa, for that. But like my dad said, we're going to get the party started now. So we're going to start off with our first performance. But before we start the performances, I just want to say there's a lot of people that are going to be performing here today. And a lot of these performers haven't even danced once in their life. But they've been very patient with my nagging, my videos, my practices. So I just want to say before we start off, I'm very, very, very grateful for each of you and extremely, extremely proud of all you guys as well. So we're going to start off with the first medley. You guys should already know and like kind of be ready on the sides, but it's the girls and cousins one, just to start. उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। मुंडे आवे हो ना मेरे पीछे लट्टू, नजर जो लगी कहाँ से लाऊंगी नजर बट्टू। मुंडे आवे मैनू फॉलो न कर तू, पब्लिकली यूं मेरा हाथ ना पकड़ तू। कुड़िए 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 छलका छलका रे कलसी का पानी, छलका छलका रे ओ आँख न मानी। छलका छलका रे कलसी का पानी, छलका छलका रे ओ आँख न मानी। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है, पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है, पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है। ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है, वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है। नच देने सारे रल मिल के, आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। नच देने सारे रल मिल के, आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। खसमानों का नहीं
मुझे लगती है तू कितनी प्यारी रे, मुझे लगती है तू कितनी प्यारी रे। खुशियाँ जितनी है सब ढूंढ ढूंढ के लाऊं, तेरी डोली के संग कर दूं साड़ी रे। दीवाना है देखो बेकरार वो, संभालो संभालो ना प्यार हो, अपना बना के देखो दिल न चुरा ले वो, ऐसा क्यों लगे है बोलो ना। झूम चिक चिक झूम तुम बोलो है वो कौन जो बार बार ये दिल खोता है देख के उसको। झूम चिक चिक झूम तुम बोलो है वो कौन जो बार बार ये दिल खोता है देख के उसको। ये कैसा लड़का है, ये कैसी लड़की है, इसका मैं क्या करूं। इससे मैं क्या कहूँ। ये लड़ता है अकड़ती है, झगड़ता है बिगड़ती है, दीवाना है दीवानी है। ये लड़की है दीवानी है, दीवानी 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 दीवानी। ये लड़का है दीवाना है, दीवाना 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 दीवाना। मुझको क्या हुआ है, क्यों मैं खो गया हूँ। पागल था मैं पहले या अब हो गया हूँ। बैठी है निगाहें और बिखरी है बात, तुमने बनाया है क्या अपना ये हाल। कोई मिल गया, कोई मिल गया, मेरा दिल गया, मेरा दिल गया। क्या बताऊँ यारो, क्या बताऊं यारो, मैं तो हिल गया। मैं तो हिल गया। कोई मिल गया, मिल ही गया, मिल ही गया। I know Neha said this as well, but I want to say huge, huge, huge thank you to everyone for being here. This is literally my entire life right in front of me. So I can't express how grateful I am for everyone to taking the time. People have traveled from near and far to be here and celebrate me. And my whole family, and not even just thank you for this wedding, but just thank you for being a part of our life. For me, 30 years. For my parents, it's been a lot longer than that. So thank you so much from the bottom of my heart. This next performance is just, it's something, it's not anything perfect, but there's a reason why it's being done. So a lot of you may or may not know this, but when I was 7, my Tinku Mamaji, who is, if you don't know, that is my mom's brother. He was in the movie industry, like the Bollywood movie industry. And so I was visiting my grandparents in Calgary, and they were like, hey, we need a girl who's like a young Indian girl, like 7, 8 years old, who can play flashbacks for the girl in the movie who's getting married. You know where it is. So obviously I said yes. I jumped at the opportunity, and you know, fast forward, that music video is actually, I am the young girl she's thinking about her life as she is, and that's very reflective of my life today. I don't know if I'll be able to get through the whole song without crying. So anyway, the song is called Baba Ki Rani Hu. I'm already gonna cry, okay. So it's called Baba Ki Rani Hu, and I'm just explaining the meaning for those who don't understand, but it's basically like I am daddy's princess and mommy's princess, and she's kind of reflecting on her life growing up in the house. So it might not be the greatest, guys. My voice is already shaking. And Neha's gonna hold my mic because my Mendi is not.
चिट्ठियाँ हूँ। We're gonna do our dance performance to hype up the energy again. So please give a round of applause for my mom, dad, and my sister for our family performance. रात की रंगीनी देखो क्या रंग लाई है, हाथों की मेहंदी भी जैसे खिलखिलाई है। रात की रंगीनी देखो क्या रंग लाई है, हाथों की मेहंदी भी जैसे खिलखिलाई है। दोस्तियों ने आँख यूं खोली, ओ झूमती धड़कन यही बोली, बल्ले 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 नाचे है ये बावरा जिया, बल्ले बल्ले ले जाएगा सावरा पिया, चले चले नैनों में जैसे प्यार का दिया। बल्ले बल्ले नाचे है ये बावरा जिया, बल्ले बल्ले ले जाएगा सावरा पिया। ये भी न जाने वो भी न जाने, नैनों के रंग नैना जाने, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। जग की कोई रीत न जाने, मैं तो बस तेरी हुई दीवानी, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना वे मखना, अब तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना। मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना, छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना वे मखना, अब तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना। मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना। चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, काशनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके रहते, काशनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके रहते। ओ कुड़ियो गुड़ किने खा लिया, गुड़ वाली चाह किने पीती, बुआ जी दा नाड़ा किने खिंचिया, ओ खिंच के मारी किने सीटी। ओ छड्डो जी छड्डो, जाके पकड़ो वो हलवाई, ओ जिसने गुड़ की बना दी मिठाई, ओ सबको बात है ये समझाई। ओ गुड़ नालो इश्क मिठा, ओ गुड़ नालो इश्क मिठा, गुड़ नालो इश्क मिठा, ओ रब्बा लगना किसे नू जावे, गुड़ नालो इश्क मिठा। सोनी मेरा दिल ले गई, ऐ कुड़ी मेरी जान ले गई, मुझको यार कोई तो बचाए, गुड़ नालो इश्क मिठा। तू तो तेरी खिच खिच रखदा नी, मारे गए इशारा तेरी अख दा नी। सुन वे मुंडिया दूर ही रह, तेरा चेहरा मैनू जच
you guys. Thank you. Can I just get Manish Uncle to the front, please? There you go. In the meantime, while he gets ready, I just want to say, Manish Uncle's been a very special person to both Hannah and our entire, sorry, I'm so tired, to our entire family. And Manish Uncle has the most beautiful voice, very similar to Sonu Nigam. So you guys are here for a treat today. I'll pass off the mic to him. पुरावो माटी लगावो आज मेरे पिया घर आवेंगे आज मेरे पिया घर आवेंगे खबर सुनाऊं जो खुशी बताऊं जो आज मेरे पिया घर आवेंगे आज मेरे पिया घर आवेंगे तेरी सखी मंगल गौरी धरती अंबर सजाओरी उतरेगी आज मेरे पी की सवारी अरे कोई काजर लाओरी मोहे कारा टीका लगाओरी उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो आज मेरे पिया घर आएंगे आज मेरे पिया घर आएंगे Thank you. That's it. Thank you. Thank you. So next we're gonna have the parents' performance, and so I'm just gonna give a quick rundown for everyone. Let's just end the performance. Just remember, moms, you're entering from this side or that side, whatever side you're closer to. Exit from this side, and then dads come in from this side. Good? आज सजया है वे सारा शहर आज हो गई आवे रब दी महर हाय सजया है वे सारा शहर आज हो गई आवे रब दी महर अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे तेरी बन जाना अज तू सजना वे अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे तेरी बन जाना अज तू सजना वे खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे सारियां ने नचना सारियां ने गाना वे खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे सारियां ने नचना सारियां ने गाना वे
शब आए रे, पन्नों से बनने के मिलने की जरूरत आए रे, शहनाइयों गूंजे सबके आंखें भर आए रे, शहनाइयों गूंजे सबके आंखें भर आए रे। 16 बरस के 2 कदम चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। हाय बन्नो परदेसिया के देश के, चौबारे तुझको भा गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। नवराई माझी लाडाची लाडाची ग, आवड हिला चंद्राची चंद्राची ग, नवराई माझी नवसाची नवसाची ग, अप्सरा जशी इंद्राची इंद्राची ग। और आई चली शर्माती घबराती वो, पिया के घर खिलाती बल खाती वो, सुरमई नैना छलकाती छलकाती वो, पिया के घर भरमाती सकुचाती वो। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। तू होगी 1 2 2 ये what to do, हो गई मुंडे दी पतंगा वारीगी, तू एवें उड़दी, हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी, टुक टुक तू करदी, मेकअप तू करदी आ, अंग्रेजी पढ़दी, गिट पिट तू करदी, जिम्मे कोई न सादी विक्टोरिया, तू कैंटी बिग बैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदों नचे पैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा, तू कैंटी बिग बैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदों नचे पैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया,
प्यार की राह में अपना नाम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर ज़बान पे, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे Hannah's very best friends. It's funny because I actually thought that I was going to have this speech very memorized. I'm like, I've been friends with Hannah for 18 years now, so you'd think I've had this speech down pat for quite some time, but I will be looking at my phone a little bit. So, Hannah and I have been friends since middle school. We have our awkward grade 8 socials. We shared our first crush like back in like grade 8, and we're still making fun of each other for who we picked. So we've seen 100 different versions of each other. So I tried to think what's a good version to talk about today. And one thing that came to my mind was Hannah and I went on a grad trip after university. This is the version that I'd like to say we are backpackers. So we bought the best of the best backpack. We bought shoes, we bought accessories, we booked hostels for 2 out of the 4 weeks. So a couple stories from that trip is we almost missed our flight one day, and Hannah and I looked at each other. We see that the line for the check-in for the diplomats was empty. So naturally, we both decided we're going to be diplomats for the next 20 minutes. Went into the line, got in. It's a little alarming how easy that was. And then as we were going through the hostels, thinking that we were these big backpackers, the last week came, and me and Hannah were like, oh, I don't know if we can do these hostels. I don't know if we can live in a backpack anymore. So what did she do? She called her dad, and she said, Papa, can you please book us a 4-star resort for the last week? We did. We stayed in a resort for at least a decent amount of that backpacking trip. So we have a lot of stories to tell, and something that's relevant for why we're here today is, Hannah, I'd like to think I played a small role on why we're here today. So a few years ago, Hannah and I were talking, and randomly we're just saying, oh, we got a network in this industry. So I'm like, Hannah, I know someone, mutual connection of ours, that I think you should message. Fast forward to today, that guy was Bhavik. One LinkedIn message to end, the rest was history. I'm really happy for you, Hannah. You're like a sister to me, and this chapter is just something so beautiful, and I'm so emotional, but I'm just really happy to be here and with your entire family. So I'm gonna pass the microphone now on to Yashi. Okay. Hi, everyone. So to me, Hannah is my sister, my safe place, and my heart. We met back in 2009 in our high school photography class, and I found one of the most important people I would ever come to know. From that day forward, we just knew. We all even wrote a best friend contract. Yes, it's a real one, and yes, we've mentioned it at all our wedding speeches. But since that day, actually over the years, we've held every word of that contract. In 2012, we went to Africa together, a trip that was wild, beautiful, and a life-changing experience. But honestly, some of the most transformative moments haven't been halfway across the world. They've actually rather been in our living rooms and in parked cars. We walked through the most beautiful highs together and held each other through our darkest lows. There's no part of my life Hannah doesn't know, and she's been there for every step of it. And that's just who she is. Hannah has this quiet superpower. She feels everything deeply, just her own emotions, but not just her own emotions, but yours as well. She can sit with you in your mess, your joy, your heartbreak, and somehow put into words what you didn't even know you were feeling. She doesn't just empathize, she guides you through it with a grace that's honestly really hard to describe. I used to actually hand her my phone back in high school and beg her to help me text my boyfriends. Yes, boyfriends.
during some of these dramatic teenage meltdowns. She'd sigh, smile, take my phone, and somehow turn my chaos into compassion. It's funny to think about now, but even then, she was teaching me how to speak with love. And that love, her love, is endless. You deserve that kind of love. That kind that holds you gently, that listens without needing to fix, that chooses you every single day. And you found it. I see in the way that Vic looks at you. I see in the way you soften around him while still shining as brightly as you do. You're stepping into this new chapter with the same courage, grace, and open heart that you bring to everything. I am so, so proud of you. You will always be my best friend, my sister, and my anchor. And now I get the joy of watching you become this beautiful wife and hopefully a mother soon. Especially to someone that is so incredibly lucky to call you his. So here's to Henna and Vic. May your home always feel like safety. May your hearts always choose each other, even on the hard days, and there will be a lot. And may you continue to grow your Bollywood dream together. I love you endlessly. So as I was thinking of what to say today, I kind of found it hard to put, years of friendship with Henna into words. I soon realized it's not what she is that makes her so special, but it's how she makes all of us feel. Henna is someone who really shows up, especially in the moments. She shows up for you when there's an event, and it's not just to attend. She's really a part of it. She becomes a part of your family. Whether she's learning a Tamil dance, she's joining you for Garba, she really incorporates herself into your family. No one leaves the event without knowing who Henna is. She's the first on the dance floor, and usually also the last to leave. Probably because of her Bollywood, background. She also shows up when things go wrong, when life gets messy, and life always gets messy. She's not there with just her comforting words, but she has a plan, she has an action. She's like, okay, this is what we're gonna do. She's the person that, usually makes your joy louder and your pain a little bit lighter. You don't always get the chance to tell people in your life, the people you love the most, how they've changed your life. They've helped you become who you are. So I want to tell you one thing of maybe how Henna has shaped me into who I am today. When I was coming into university, I was very shy, very quaint. You'd find me probably studying in my room, not in the library. I met Henna, and by the next year, I would have been you would have thought I was a whole different person. She taught me a lot, but I guess the biggest thing I could pinpoint is Henna taught me, and I'm sure a lot of us, to believe in yourself. Sometimes I'd be like, oh, I'm kind of nervous. I don't know if I want to join this club. She'd look at you nonchalantly and be like, just go do it. Like, she'd say it so calmly that what was I worried about, That's kind of how she takes on life. The world is her oyster, and she motivates all of us to go for what we want to do. My wish for everyone in the world is to have someone like Henna in their life, a soldier, a light. Lucky for all of us in the room, we have that pleasure. And cheers to you. Cheers to Bhavik for having you for the rest of your life.